वो साइड से जाइए, वो साइड से। Yes, ready? Canvas, ready? Okay. दादा साइड हो जाना, साइड हो जाना दादा, साइड हो जाना। चलो एक I'm very happy that on my invitation, Miss Kenya Tourism, Miss Stephanie Dikir, she has come all the way from Nairobi to Mumbai. The photographs which you will see here are clicked by me during my 2 visits to Kenya last year. Last year I visited twice. On the first visit, I met Stephanie in Masai Mara. Generally in Masai Mara lodges, they have the functions in the evening to entertain the tourists and all. So that time there was a function, some cultural show was on. And she had also come to see it. And we were also watching it. And somehow, I don't know, her personality attracted me. And I was telling Sudhir that she must be something. And then, I don't know, as soon as the program got over, she also must have been attracted towards us. So
approached each other and then introduced ourselves. So this is how we met, and instantly we introduced each other, and then we became friends. At that time, she was preparing for Miss Kenya tourism, and then I, as usual, as Sudesh habit, he gave some tips to her, and luckily, I saw her. She was so enthusiastic and very confident and very humble when she was contesting for it. So she was telling, I must become, I must win, and then we really boosted her, and she gave the tips, and ultimately we came to know that she has won the beauty contest. So specially we went again to Kenya to congratulate her in the month of November. And in November we really crowned her as Miss Kenya Tourism by presenting her with a tiara from India. We bought it from Tiptown Jewelers. Mr. Shirish Bhai is there. From him we bought. He has a shop. So tiara we bought from him. Yeah. She says that it's very beautiful. So now she has come here to reciprocate it. Now friends, such gestures amongst people of two countries create really goodwill and strengthens friendship between two nations. Visit by Stephanie, that is Miss Kenya Tourism, is a step by Kenya towards friendship with India. Kenya and India have many things in common. You all will have to, you all must visit Kenya because there is a lot of common things there. And the wildlife over there is wonderful. Be patient. One thing I must confess that, but for the encouragement of Mr. Cyrus Shroff, whom I consider as my guru in photography, I would not have clicked all these photographs. Give him a big hand. Cyrus, please come. He's my guru in my photography. He's my teacher actually. He has taught me all this, how to click these pictures. Yeah. Please, Cyrus. Thank you. Yeah. And I must thank Kalyanji Bhai Chheda and his wife Kumudben Chheda. They are the owner of this Please come out, Kumudben. And above all, my husband Dr. Sudhir Shah. He has always encouraged me in all my activities. This time he insisted that I must publish a coffee table book containing all these photographs. And after everything else, it would not have been possible if you all had not been here. So I thank all of you for being here. Thank you. Thank you. And now, I will ask Stephanie to inaugurate the function by cutting the ribbon of this beautiful picture. Come. Please come with me. थोड़ा चलो दादा ये This lion was just about 10 feet in front of us.
there was a fight between elephant and lion. The elephant threw this lion away and he was angry and staring at the elephant. And at that time Sangeeta took this photograph. Now I request my elder sister Meena Ben, please come and present her with the statue of Ganesha. Ladies and gentlemen, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Kemcho. Jumbo! I am so excited and really humbled and honored today to be here in South Mumbai, India. The beautiful Sangeeta Joshi and Dr. Sumit Shah, they invited me here to inaugurate the event and launch the travelogue written about Kenya in Gujarati language. So I am so excited and happy to be here. I came here today to urge you not to miss coming to Masai Mara. That should be your bucket list. You should come. We'll be having, in the Masai Mara is where we have the 8th wonder of the world. That is the wildebeest migration. It happens on June throughout August. So come experience the time of your life. You know, the wildebeest, they migrate from Tanzania, Serengeti to Kenya through Mara River. Do you know why they come to Kenya? They migrate to come and meet. Masai people. Yes, why is that? If the animals agree, our environment, Masai Mara is very beautiful. So if you are looking for a honeymoon destination, Masai Mara is the best place to be. So I am welcoming you to come. I'll be at the airport to welcome you if you come to Masai Mara, Kenya. And I am so humbled. I'm really happy for your hospitality. Since I arrived, I have received a lot of hospitality and I'm so happy. I would love to come back again. Thank you so much. Has many things in common, and one of it is the British rule. Britishers ruled upon India for almost 200 years. They also ruled upon Kenya for more than that time. Fortunately, we had Mahatma Gandhi, so we got our freedom without any bloodshed. But Kenyan people had to fight, had to shed their blood, and then only they got their freedom. A coffee table book of all the photographs which are displayed here. And I'm going to request Stephanie to launch. I would like to say something. Should I say on my own? Yeah? Yeah. Oh yeah, sure. Yeah. See, I'm a professional photographer for many years, and I used to do weddings and all. I used to cover them, but later on I stopped, and then I took it as a hobby, and I continued as a hobby. And then when I go around the world to travel and all, that time that hobby has become very useful, and I have clicked many pictures, thousands of pictures I'm having of wildlife, of course, in all other countries, and lots of. Last year also I was having my exhibition at the Jahangir Art Gallery, and now this year I have conducted here. So this is what it is, and this time it is about the wildlife of Kenya. And since she is my friend, and we met actually for the first time in Kenya when I visited, and then we became so good friends. Right. And so I visited second time just to greet her when she became the Miss Kenya Tourism. And now she's reciprocating by coming here and inaugurating my function, my exhibition. So I would like, the unique thing about this is that see, I am going to Kenya, I am clicking the wildlife pictures. An Indian is clicking the pictures of wildlife of Kenya. Then I am coming all the way to Bombay back, to India back, and then I am holding the exhibition of that wildlife. And a Kenyan woman, a Kenyan girl, or Miss Kenya Tourism, she comes all the way to inaugurate the function for the exhibition of wildlife of her own country.
So it's a very unique thing about it. It must have never happened here, anytime. Actually, I am really excited and humbled by the beautiful Sangeeta Joshi. They came together with her husband in Masai Mara, Kenya. We met there. We talked. They are my good friends. The next time they came, they gave me a present because I won Miss Tourism Kenya. So one thing that I really loved and I had to come is that how they came to Kenya, Masai Mara. They love the wild animals. They want to share this experience with their own people. Yeah, they want to share the experience with their own people. So seeing that kind of love for our animals, we're used to our animals we don't see, but when other people from another country come and they see the beauty that is there and they fall in love with it and they want to share to the rest of the world. So that makes me feel really happy and honored to come from Kenya, mostly Masai Mara. So I came here to launch and inaugurate her event, the photo exhibition and her book it's a travelogue book about Kenya, Hello Jambo Kenya, written in Gujarati language. No, it is written in English. It is written in English, yeah. Okay, written in English. Yeah. So I am happy. I am lacking words to say because I am so excited and really happy. And also I came here to welcome the rest of the beautiful Indians people, to come visit Masai Mara. The Wild Beast Migration, which is the eighth one of the world, is happening on June throughout August. So they should not miss out because the beautiful Sangeeta Joshi and his husband, Dr. Sudhir Shah, her husband, Dr. Sudhir Shah, came and experienced that. So if they did, why not the rest of the Indians? They should come back. They should come down to Kenya. Yes. And how was your experience in India? I just landed today. Today. And when we were landing, I could see the way South Mumbai is really beautiful up there. So I can't really wait to tour tomorrow and the rest of the days until I go back. So I think I'm going to have fun. It's beautiful here. Yes. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ के साथ साथ आप फैशन फोटोग्राफी भी आगे चले करेंगी या कुछ कैलेंडर्स Yeah, I may do it. I have not decided yet, but I may do it because I have done the portfolios of many artists, being the artist. Because I myself is an artist, I'm an actor. And recently I received the award for my performance in Preet Piyu and Pannaben as Pannaben. So वो तो मैं सोचती हूँ करूँगी शायद. बिल्कुल मैंने की है फिल्में. मैंने फिल्म की है रंग दे बसंती मैंने की है. उसमें मैं कुणाल कपूर की मदर का मैंने रोल किया है. दीवानगी में मैंने यंग अजय देवगन की मदर का रोल किया हुआ है. फिल्में की हैं मैंने और हिंदी सीरियल्स भी की है काफ़ी और काफ़ी अच्छा काफ़ी काम किया है. मैं 22 साल से एक्टिंग कर रही हूँ. आई एम डूइंग गुजराती थिएटर ऑल्सो एंड हिंदी और मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी लिए हैं हिंदी प्ले वगैरह में भी लिए हैं. अभी तो मेरा ये सीरियल मेरी चल रही है प्रीत पियू अने पन्नाबेन, तो उसमें बिज़ी हूँ मैं. और आगे जाके अगर मुझे बहुत अच्छी कोई ऑफ़र मिली तो आई डेफिनेटली डू. आई वुड लव टू डू सम गुड फिल्म्स एंड सम गुड रोल्स. डेफिनेटली आई विल डू इट. फोटोग्राफी जो लोगों से जो फोटोग्राफी से बहुत प्यार है उनको मतलब क्या टिप्स देना चाहिए? उनको क्या टिप्स देना चाहिए? फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप सचमुच बहुत फ़ोटोग्राफ़ी को चाहते हैं तो देन यू शुड डिस्प्ले इट. आपको अपना फ़ोटोग्राफ़ी का प्यार सब लोगों को बताना चाहिए. बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जो नई लोगों को पता होते हैं. नहीं आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया काफ़ी पावरफुल हो गया है, लेकिन फिर भी फ़ोटोग्राफ़ी अगर करनी है, आप लव करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी को, तो यू शुड शो इट टू पीपल. फ़ोटोग्राफ़ी का एक बढ़िया एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं मसाई मारा के जंगल में गई थी और मैंने एक चीते को, यहाँ पे फ़ोटो वहाँ उधर लगा हुआ है, चीते को जब मैंने इम्पाला के ऊपर झपटते हुए देखा, कैमरा मेरे हाथ में यूँ का यूँ रह गया. मैं क्लिक कर नहीं सकी उसको. इतनी ओवरवेल्म हो गई थी कि अब पहले वो क्लिक ये देखूँ या क्लिक करूँ, ऐसे हो गया था.
बाद में मैंने ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे पिक्चर्स खींचे, लेकिन ऐसा ये जो लाइव एक्सपीरियंस देखने मिलता है वो बहुत बढ़िया होता है, और वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करिए तो कितनी अलग लगती है मतलब आपको बाकी हर चीज़ होती है, मतलब हर फोटोग्राफी? बाकी फ़ोटोग्राफी में हम लोग सब कुछ प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें बना सकते हैं, बनावट कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में कोई बनावट नहीं चलती है। जो है जहाँ जैसा है वैसे ही पिक्चर्स हमको लेने पड़ते हैं और उसी को हम लोगों को दिखाने पड़ते हैं। तो यू शुड बी वेरी क्विक, जब फ़ोटो निकाल रहे हैं तो बहुत क्विकनेस होनी चाहिए टू कैप्चर द मोमेंट। वो मोमेंट दोबारा नहीं आती है। जब कोई भी एनिमल जो है वो बहुत मूडी रहते हैं वो लोग, तो वो एक बार उन्होंने जो पोज दे दिया वो पोज आपको दोबारा नहीं मिलेगा कभी भी। तो वो बहुत क्विकनेस होनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है, मतलब कोई और इंसिडेंट आप कोई शेयर करना चाहें? मतलब काफ़ी डेंजरस काम होता है जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। हाँ, अभी हम लोग जब मसाई मारा के जंगल में गए थे तो हम लोगों ने देखा कि एक बफेलो को अराउंड 17-18 लायंस खा रहे थे। उन्होंने ऑलरेडी शिकार कर लिया था और उसको 17-18 लायंस उसको खा रहे थे। तो हम लोग देख रहे हैं, हमारी जीप वहाँ जाके खड़ी हो गई और वहाँ पे सामने 17-18 लायंस उसको खा रहे हैं। और सडनली हम लोगों का ऐसा ध्यान में आया कि अरे समझो कि यहाँ से पीछे से कोई लायन ऐसे जंप करके आ गया और हम लोग को पकड़ लिया। तो और ये ऐसा सोच दिमाग में आई और हम लोग ऐसा घूम रहे हैं, जैसे ही पीछे घूमे तो पीछे 2 लायंस बैठे हुए हैं हमारी जीप के पीछे, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए बॉडी में। उसके बाद फिर थोड़ा और नज़दीक ऐसी नज़र गई तो हमारी जीप के बिल्कुल नीचे एक लायन बैठा हुआ था। तो वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। चीते की जो मदर चीता था वो अपने 3 कब्स को एक गज़ेल का बच्चा था उसका शिकार करना सिखा रही थी मदर। वो वहाँ आसपास बैठी थी और वो बच्चे उसका शिकार कर रहे थे, खेल रहे थे। वो पकड़ते हैं छोड़ते हैं क्योंकि उनके दांत बहुत नाजुक रहते हैं, तो वो नहीं पकड़ सकते, तो पकड़ते हैं छोड़ते हैं। करीब 20 मिनट तक वो एक्सपीरियंस हमने देखा। अल्टीमेटली वो बच्चे को उन लोगों ने पकड़ लिया और किल कर दिया। वो चीज़ें सब देखने मिली हम लोगों को वहाँ। ऐसी बहुत अजीब सी चीज़ें वहाँ देखने मिलती है। लायन का बच्चा और रैबिट आपस में खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं देखने मिलती। फिर एक ज़ेब्रा ने विल्डरबिस्ट के बच्चे को हायना से बचाया। एक जात का प्राणी दूसरी जात के प्राणी के बच्चे को क्यों बचाएगा, लेकिन वो हमने देखा वहाँ पे जंगल में। नहीं तो ज़्यादातर तो जंगल रूल चलता है, लेकिन वहाँ हमने ये चीज़ देखी। खतरनाक जानवर भी होते हैं। बिल्कुल डर लगता है मतलब ये सब करते हुए? डर, क्योंकि हम लोग जीप में रहते हैं, काफ़ी सेफ़ रहता है। हम लोग को पता है केनिया जंगल्स बहुत सेफ़ है, तो वो सारी चीज़ें हमको पता ही है, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। लेकिन बहुत एक्साइटिंग लगता है, डर से ज़्यादा वो एक्साइटिंग है। और कुछ मैम दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, कुछ दर्शकों से और कुछ कहना चाहेंगे? बस दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिंस मैंने स्टेफनी को यहाँ बुलाया हुआ है, शी इज़ मिस केनिया टूरिज़्म, वो इसलिए स्पेशल उनकी गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे भेजा है। तो ये सबको अपील करना चाहेगी कि सब लोग जब भी आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करो तो बिल्कुल केनिया में जाना। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलेगी। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है और बहुत ब्यूटीफुल, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली विजिट केनिया, यू विल लव इट। हाँ, Thank you so much.